Hello everyone. So today we are here with the analysis of the CBSE board sample paper and we are just left with one section, that is section D, and which is going to be for the 5 markers. तो हमने 1 marker कर लिया, 2 marker कर लिया, 3 marker कर लिया, 4 भी कर लिया और अभी हम किस पे हैं, 5 markers पे हैं. So today I'll give you a detailed solution for section D and it is going to have 4 questions of 5 marks each and with the internal choice in 2 questions. Right, so let's move on. So I'll be giving a detailed study as I said, that is step by step marking के साथ. Correct? चलिए start करते हैं first question से. So on doing the proofreading of an book, on an average 4 errors in 10 pages were detected. Using Poisson's distribution, find the probability of no error, 1 error in 1000 pages of the printed edition of the book. और इसके साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो पहला वाला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे है और दूसरा वाला बायनोमियल पे. हम दोनों सॉल्व करेंगे वन बाय वन. And remember, it's a 5 marker, right? So it's not like that it's going to be lengthy, but steps are very important because marks will be given for each important step. Correct? Now let's move on. So it's a simple question. It's not as lengthy as it should be for 5 marker. So you have to be very clear with the formula and everything so that you get full marks. So पहले हम जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं पॉइसन का. ठीक है. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ऑफ कोर्स उसके भी मार्क्स होंगे यहाँ पे. फिर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है निकालना, लैम्डा. एंड व्हाट इज दैट लैम्डा? लैम्डा इज एनपी. What is n? The total numbers. What is p? The probability of success. Right? So n is the total numbers of items or anything what you have, and then you can calculate lambda. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 errors in 10 pages they have given. So 4 errors in 10 pages means your लैम्डा विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. तो आपका ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया कि कितने एरर आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एरर, बट दे हैव गिवन एन एवरेज 4 errors in 10 pages. सो एवरेज लैम्डा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इट इज द मीन, और मीन और एवरेज आर सिनोनिम्स. So it means that directly they have given you lambda which is 4 in 10. So what's it? 0.4. So that's your direct lambda value. आपको n और p से निकालने की ज़रूरत नहीं है because यहाँ पे as such if I would say कि you are not given anything like that कि आपको probability मिले direct. So lambda is given direct on an average. Average means mean. Mean क्या है? 4 errors in 10 correct pages. So now what is your point? So 0.4 error in one page. Now let's move on. So what is it? So what's the formula now? P of x is equal to r e raised to minus lambda, lambda raised to r upon factorial r. So this is what we have. So now here we will get half mark for this, 1 mark for this. Yes, 1 mark for the formula, yes, because this is going to be a 5 marker. अभी हम substitutions कर देते हैं values का. So e raised to minus 0.4, lambda that is 0.4 raised to r upon factorial r. So this is what you have, and this value of exponential minus zero point 0.4 is already given to you in the question which is 0.6703. करेक्ट, ये आपका तैयार हो गया. अब हमारे पास क्या दिया है, 1000 पेजेस में 0 error. सो नाउ यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली. सो पहले हम 0 error का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और बाद में वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं कि 0 error की परसेंटेज कितनी. फिर जितने भी पेजेस होते हैं वी कैन मल्टीप्लाई 1000, 10,000, 2000. नाउ फॉर 0 error फर्स्ट केस. करेक्ट. सो फॉर 0 error what do we have? P of x is equal to 0. So your r is 0 here. Correct. Now exponential minus 0.4 into 0.4 raised to 0 upon factorial 0, which is exponential minus 0.4 which is 0.6703. ये आंसर हो गया 0 का. तो फर्स्ट का आंसर इज 0.6703. नाउ दिस इज फॉर द रैंडम वन पेज. अभी कितने पेजेस हैं, ये परसेंटेज है, एक पेज में इतने परसेंट. नाउ व्हाट इज फॉर 1000 पेजेस? नाउ फॉर 1000 पेजेस लेट्स मल्टीप्लाई बाय 1000. ये जो आंसर आता है ना स्टूडेंट्स, याद रखिए दिस इज ऑलमोस्ट द परसेंटेज. करेक्ट. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. सो नाउ लेट्स मूव इट. So 670 pages will have no error, 0 error.
Correct? So this is what we have. Now let's move on to the next. Next part is one error. So we will put now 1. So what's your R? 1. So e raised to minus zero point 0.4, zero point 0.4 raised to 1 upon factorial 1. So what do you get? 0.6703 into zero point 0.4, and factorial 1 is also 1. So if I just multiply it, 4 3s are 12, and then 8, and then 2. Correct? Now let's put the decimal. 1 2 3 4 5. So 0.26812. Now for 1000, right? For 1000 pages, what do we get? We will multiply it by 1000. 26812 पॉइंट हमारा स्टार्टिंग में है. सो वन एरर कितने पेजेस पे आ सकता है? वॉट्स द प्रोबेबिलिटी बेसिकली? इतने पेजेस पे आ सकता है. प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.26%. करेक्ट. नाउ 1000 है तो विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड दिस विल बी द नंबर ऑफ पेजेस. अब मार्किंग देखिए, ऊपर हाफ हो गया, ये 1 हो गया. अभी आपके पास 2 पार्ट्स है, राइट? और आपके पास 1000 pages का भी point very important point है. So how will you mark it? So for marking this, what do we have? We have half of mark for the finding the pages. आपने क्या लिया? 1 mark for finding this, right? So this comes out to be how much? 4.5. तो अभी क्या होता है? समटाइम्स दे गिव हाफ मार्क मोर फॉर द लास्ट पार्ट, कि आपने सब कुछ ठीक से लिखा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे नोटेशंस ठीक है, एंड दे गिव यू हाफ मार्क. तो समटाइम्स फॉर द लास्ट पार्ट वी टेक 2 marks. So this is in total we get 5 marks. Otherwise this is how it goes on. Correct? Now let's move to the second part. How many times must Sunil toss a fair coin so that the probability of getting at least one head is more than 90%? Now this is a question which is based on binomial theorem, right? Now binomial theorem का basic formula क्या होता है? Binomial theorem का basic formula, let's do it. So now or part, right? We are doing. So what is the formula for this? NCR P raised to R Q raised to N minus R. What is P and Q? P is probability of success, Q is probability of failure. So now what's the question given to you? At least one, minimum one. सो आपके पास डोंट वरी अबाउट ग्रेटर देन और एटलीस्ट 90%, वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. द ओनली थिंग इज पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए. अभी हमारे पास क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन. सो हेड और टेल. सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? 1/2, बिकॉज हियर वी आर कंसिडर्ड विद हेड. सो नाउ what is your P? Your P is half. Your Q is again half. What's your N? सो दैट एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%. सो हमें एन ही तो फाइन करना है कि हम उसको कितनी बार टॉस करें कि एटलीस्ट वन आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% हो जाए. सो एन वी हैव टू फाइन. सो अभी हमें सब कुछ मिल गया. व्हाट इज योर आर? योर आर इज 1 2 3 4 टिल एन इट विल गो. तो अभी हम कैसे करेंगे? तो हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. So no worries, we don't have 10, no worries, because we will do the reverse process. 1 minus p of x is equal to 0. Now what's the formula that applies here? 1 minus n c 0 half raised to 0 q raised to n minus 0. Correct? This is what we have. And now what is given to you? We have to find n such that this becomes greater than 90%. So now let's do it. 1 minus nc0 half raised to 0 is 1, q raised to n is greater than 90%. Instead of equal to, the only difference in this question is greater than. ओनली डिफरेंस. आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. डोंट वरी अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम. दे आर गुड टू अटेम्प्ट. ज़्यादा मार्क्स भी नहीं हमारे डिडक्ट होते, बहुत आसानी से वी कैन डू इट. ओके. नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. सो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0 factorial n minus 0 and then 1 q raised to n is greater than 90 by 100. We can cancel 1 0 also. So what do you get? 1 minus factorial n 1 हो जाएगा. So what do you get? Q raised to n. So what will be the value of q raised to n?
q raised to n, और q क्या है हमारे पास half. Okay, I have not put that value. Now let me put this value because now we are reaching to the question. Now q raised to n will be what? 9 by 10 minus 1. So what do you get now? Just reshuffling of the terms, right? This is what we have. Now minus sign को अगर हम remove करेंगे, we will have to switch the inequality sign. So what will you get? Half raised to n is less than 1 by 10. Now in these type of questions, what do we have? In these type of questions, we have to do hit and try sort of. Okay, so now tell me, 1 by 2 raised to n is less than 1 by 10. This is what we are getting. Now I will, if I take the reciprocal, तो क्या होता है? फिर से identity change होती है, right? So what will you get? 2 raised to n is greater than 10. This is what we get. क्योंकि डेसिमल्स में 1/2 और 1/4 में क्या रिलेशन है? 1/4 इज लेस देन 1/2. रेसिप्रोकल्स में अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर छोटा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है. सो इफ वी रेसिप्रोकेट द टर्म्स अगेन द इनइक्वालिटी साइन चेंजेस. करेक्ट. आपको एक सिंपल सा बताते हैं. अगर 1/4 इज लेस देन 1/2, ये ट्रू है. अगर हमने रेसिप्रोकल किया तो 4/1 इज लेस देन 2/1. इज इट ट्रू? नो, इट विल बी ग्रेटर. तो इसलिए रेसिप्रोकल जब आप करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है. नाउ 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन 10. जस्ट थिंक ऑफ इट. 2 रेज टू 1 2 होता है, 2 रेज टू 2 4 होता है, 2 रेज टू 3 8 होता है, 2 रेज टू 4 12 होता है. देन वी गेट द आंसर 12 इज ग्रेटर देन 10. सो इट्स हिट एंड ट्रायल हियर. सो नाउ n इज 4. अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू होगी, मोर देन 4, it will always have the probability greater than 90%. Okay, so n is 4 coming, 4 or more. Correct? तो अगर 4 or more होगा, then the probability will be greater than 90% always. So this is what we get here. Correct? So this is how we do this question. Now let's move on to the next. Now, a manufacturer has 3 machines installed in his factory. So, this is a question based on LPP. Now, for LPP, we have to draw the graph also and everything. Now, we will do it in rough here, right? So, manufacturer has 3 machines, 1, 2, 3 installed in a factory. Now, what is it? Machines 1 and 2 are being operated for at most 12 hours. Machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. एक दिन में आपको इतना चलाना ही है. And they are going to produce 2 items M and N, each requiring the use of all the 3 machines. Now you have to find the number of hours the producing 1 unit they have given below. What do you have to find? You have to maximize the profit. और कितना profit हो रहा है उसको? He is getting a profit of 600 and 400 on 1 unit of items of M and N. करेक्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. टेबल उन्होंने ऑलरेडी दिया है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है कोई भी टेबल अपने रेफरेंस के लिए. नाउ फर्स्ट आता है हमेशा लेट स्टेटमेंट. नेवर फॉरगेट दैट स्टूडेंट्स. ओके, अच्छा पहले वाले का हमने शायद मार्किंग नहीं किया. लेट्स डू द मार्किंग फॉर दिस. नाउ 1 mark will be for all the values and the formula that you have written. Then will have 1 mark for this statement, that's important. Then we will have 1 mark for this, and then 2 mark for the entire solution, right? एंड हाफ मार्क स्टूडेंट्स एक ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट. अगर आपने सिर्फ 4 लिखा, your half mark will be deducted. 4 and more is more important. Okay, because it's the answer for greater. अगर equal to होता तो आंसर कुछ और होता. That is 4 only. But if it is greater, so 4 or more. Okay, this is what we have. Now let's do it. Now let's move on with this. So let statement first we will write. So let us take X for units of M. Correct. Let us take Y for units of N. करेक्ट. सो कितने आइटम्स हमारे M यूनिट से आ रहे हैं और कितने हमारे N प्रोडक्ट से आ रहे हैं. करेक्ट. दिस इज व्हाट वी हैव. सो दिस फॉर द यूनिट्स, फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स भी आप लिख सकते हो X और Y. नाउ वी विल हैव objective function. Write it under the headings properly. Okay, so objective function Z मैक्सिमाइज करना है हमें प्रॉफिट को. एंड व्हाट इज दैट? 600 का प्रॉफिट उसको एक आइटम पे है फॉर M.
So 600x, x items हैं अगर, and 400y. So this is what we have. Now we have to write subject to constraints. Correct? Now subject to constraints. क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, टेबल को देखिए जो उन्होंने दिया है. फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन. सो 3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बनेंगे. नाउ फॉर द फर्स्ट मशीन, m के लिए 1 आर, n के लिए 2 आर्स. सो व्हाट विल बी फर्स्ट, x प्लस 2y. और कितने घंटे चल रहा है, एटमोस्ट 12 आवर्स. एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. तो हमारे पास दोनों का मिला के टाइम कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12. दिस इज फॉर मशीन 1. नाउ 2x प्लस वाई. सेकेंड मशीन को भी कितनी देर ऑपरेट करना है, एटमोस्ट 12 आवर्स. दिस इज फॉर मशीन 2. सिंपल, आपको टेबल दिया हुआ है, सो इट्स इजी फॉर यू टू राइट द इक्वेशंस. नो नीड टू रीड द एंटायर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. थर्ड मशीन, थर्ड मशीन का हमें क्या दिया गया है, 1.25, सॉरी 1 एंड 1.25, राइट. और कितने घंटे ऑपरेट होनी है, एटलीस्ट 5, मतलब 5 से ज़्यादा. ओके, सो x प्लस, लेट्स टेक 1.25 इन फ्रैक्शंस if you want, otherwise put it directly. Okay, now इसमें इनइक्वालिटी साइन रिवर्स आएगा, बिकॉज एटलीस्ट है तो मिनिमम 5 घंटे उसको चलना है. सो दिस इज फॉर मशीन 3. Now, the last important point is non-negative restrictions. It is very important to write. इसका हमेशा हाफ मार्क होता है स्टूडेंट्स, मतलब अगर आप नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका. सो दिस इज योर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब एक्स और वाई की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द एम एंड एन. So it will be always greater than equal to 0. Don't miss this point. Most of the students miss here. So you don't have to. Clear? So now for this entire formation, you will get 2.5. Yes, out of 5, yes. 2.5 definitely you will get, because everything which you are going to do further is based on this formation only. Okay, now let's make the graph for this. ग्राफ के लिए आपको जब बनाना है, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू शो द वर्किंग ऑफ द पॉइंट्स दैट यू आर गेटिंग. ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे. मार्किंग ऑफ द एक्सेस शुड बी देयर प्रॉपरली. ओरिजिन होना चाहिए मार्क. फिर जब आप लाइंस बनाएंगे डिफरेंट, उनका लिखा होना चाहिए कौन सा ग्राफ किस लाइन का है. ओके, नाउ इफ आई जस्ट डू दिस, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. पहले हम उनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में हम x प्लस 5y 4y is equal to 5 का ग्राफ ड्रॉ करें. ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो नाउ तो फॉर द फर्स्ट वन, सबसे पहले इजी होता है, x को 0 लीजिए और y को 0 लीजिए. बस 2 पॉइंट्स भी अगर आपने लिया तो प्लॉट हो जाएगा ग्राफ. सो x y. सो फर्स्ट वाले के लिए, इफ x is 0, y will be 6. If y is 0, x will be 12. Correct? Now let's make it. Let's take the even points, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So it will be a rough graph, students. Okay, you can draw on graph paper. और आप सबने बनाया ही होगा जब पेपर सॉल्व किया होगा ग्राफ पेपर पे, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ सो इफ x is 0, y is 6. करेक्ट, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया. जब y 0 है तो x क्या है, 12. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, राइट. So now if I join this, I get this. And this is the equation for the line x plus 2y is equal to 12. हमें है less than, correct? Less than का मतलब टेस्ट पॉइंट क्या लेंगे, origin, because that's not the solution. Otherwise you can take any point which is not the solution for the given line. So now it means it is this region. राइट, बिकॉज 0 इज लेस देन 12. तो टेस्ट पॉइंट से आप चेक करिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, एंड देन मार्क द रीजन, लोअर रीजन, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट, राइट, वट एवर इट इज. नाउ फॉर द नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई. जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 12. तो y 0 होगा तो x हो जाएगा 6.
So this will go like this, right? So this is the equation for the line 2x plus y is equal to 12. Again आपको lower region बनेगा because again if you take origin as a test point, it will be satisfied for this. Now we come to the next. X plus 5 by 4y is equal to 5. अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप चाहे तो एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स. Okay, so this is what we have. So when x and y, okay, so when x is 0, y is going to be 4. When y is 0, x is going to be 5. So 0 4 5 0. 0 4 means here, 5 means here. Yes, so if it is 0 4, correct, कहीं तो जाके मिलेगा. Let's see. Okay, now इसका रीजन कौन सा होगा? अगेन इफ यू पुट द वैल्यू, लेट्स टेक द टेस्ट पॉइंट. ये हमारे लाइन ये वाला जा रहा है. कौन सा है? 4x plus 5y is greater than 20. Greater than. If I put 0 0 here, टेस्ट पॉइंट देखिए, 0 plus 0 is greater than 20, it's false. अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होता है देन अबव रीजन. कौन सा रीजन आएगा? अबव रीजन. तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? शेड करने के लिए देखिए, आई विल यूज द डिफरेंट इंक so that you are clear. So now this is the region, the blue part. But we will be confined only in the first quadrant. Can anyone tell me why is it so that we will be confined only in the first? Yes, because of non-negative restrictions. हम region को आगे पीछे expand नहीं करेंगे. We will be confining ourselves to the first region. Now इसके corner points क्या हैं? A, B, C, D, E. 5 corner points are there. Now we will make the table for 5 corner points. Now this is corner points and this is Z max, and that was 600x plus 400y. Right? Corner points क्या क्या है हमारे पास? एक है 0,4, it is A. What is B? 5,0. What is C? 6,0. D we will have to find from the graph or algebraically also you will find. Okay, अभी तो I don't have graph here to show, otherwise आप लोगों ने graph पे बनाया होगा और you can check कौन सी दो lines intersect कर रही हैं and you can find it graphically also. Right now I am finding graphically because algebraically because I don't have the graph to scale it. Okay, now let me do it. So 2x plus 4y is equal to 24. So 2x plus y is 12. So it's coming how much? Subtract. 3y is equal to 12. So y is 4. And when y is 4, x is also 4. Right? So this is what we have. So now that is D point. So D point के coordinates क्या है? 4, 4. जब भी आपको doubt होता है कुछ graph से आप algebraically निकालिए. And what is your E point? E point is 6. 0,6. Now we will find the maximum value point. So जिस पे हमारा max आता है, let's see. So for the first one we are putting 281600. For the next we are getting 300. For the next 6,0 we are getting 3600. Then for the 4 we are getting 24 and 16 is how much? 40. So 4,000 we are getting. Correct, and for the last one we are getting 2400. So what is the maximum value? This. So what will be a concluding line? So the maximum profit is 4,000 rupees when 4 units of each are produced. Each are produced or manufactured. तब आएगा मैन्युफैक्चर आपको प्रॉफिट. करेक्ट. नाउ हाउ डू वी मार्क दिस? तो अभी हमारे पास 2.5 हो गया.
Now 1.5 for this. Then we have 1 mark for the final table and the final answer as well. करेक्ट, तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो जाता है 5 marks का सॉल्व. Clear to all? Right? Final concluding statement is again important. Sometimes they give half mark for this and half mark for this also. Correct? So that's important. Let's move on to the next question if this is clear. Good. Great. Now let's move on to the next. Now here a company produces a certain commodity with rupees 2400 fixed cost. तो ये किसका क्वेश्चन हुआ? Application of derivatives का, economic applications का. Correct? Now the variable cost is estimated to be 25% of the total revenue received on selling the product at a rate of rupees 8 per unit. Now you have to find the cost function, revenue function and break even point and profit function. 4 पार्ट्स है हमारे पास. ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन कमोडिटी विद रुपीज 2400 फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? 2400 रुपीज. नाउ दे आर सेइंग कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है बेसिकली दैट इज 25% ऑफ सेलिंग. करेक्ट. अब सेलिंग द प्रोडक्ट कैसे आएगा? सो लेट्स टेक एक्स क्या है. ओके, सो लेट एक्स यूनिट्स बी प्रोड्यूस्ड. तो सेलिंग रेवेन्यू कितना हो गया आपका? करेक्ट. सो रेवेन्यू ऑन सेलिंग कितने पैसे मिलेंगे आपको? 8x. अब वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट फंक्शन क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है. द अदर पार्ट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 25% ऑफ 8x. सो नाउ फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, सो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड विच इज 2400 प्लस 25% ऑफ 8x. Not x, 8x because that's your revenue. Correct? Now let's do it. So 1, 4, 2. So what's your cost function? 2400. Correct? Plus 2x. Right? So that is what we have. Clear to all? Right? So this is what we have. Now the next. What do you have to find? Revenue function. वो हमने already पहले ही निकाल लिया है, but second part है वो, तो वो second पे ही लिखेंगे आप. Though you have found it first before using the first part. Okay, so this is 8x. Now third, break even point. Break even point क्या होता है? जहाँ पे no profit no loss, that is your cost function is equal to revenue function. So break even point, correct? What is your break even point? Revenue function is equal to cost function. So 8x is equal to, so 6x is equal to, so x is 400. Okay, now the next is profit function. Profit क्या होता है हमेशा? Revenue minus cost. Correct? So that will give you. So which is 8x minus 2400 minus 2x. 6x minus 2400. Again it will be according to the number of commodities. So everything depends on commodities, profit, revenue, everything. Correct? So that is what we have. It's a very simple question. Always advisable to do this question. Okay, so now what do we have? We will have one mark for the last three parts and then half mark for the letter statement, 1.5 for this and one for each. Because सब कुछ कॉस्ट फंक्शन पे डिपेंड है, इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे. बाकी तो सब 1 1 लाइन आंसर्स है, इसलिए 1 1 मार्क फॉर ईच. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और पार्ट से. Now the production manager of a company plans to include 180 square centimeters of actual printed matter in each page of a book under production. Each page should have 2.5 centimeter wide margin along the top and bottom and 2 centimeter margin along the sides. So what are the most economical dimensions? Correct? Now it's a question based on application of derivatives. पहले वाला economic था, ये mathematical है आपका. Simple question है, ये भी बहुत simple है. So अगर हम इसको करते हैं, सो बेसिकली आपको मार्जिन छोड़ना है.
करेक्ट। सो टॉप में, बॉटम में और साइड में, टॉप और बॉटम में जो मार्जिन छोड़ेंगे हम वो कितना है एंड साइड में कितना, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। नाउ टॉप एंड बॉटम, सो टॉप और बॉटम पे 2.5 और 2 सेंटीमीटर अलोंग द साइड्स, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ भी 2.5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी, आई एम ड्रॉइंग द फिगर टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, उससे आपको बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। Now if this is x total, this is y total, okay, तो हमारा ओरिजिनल जो था पेपर का डायमेंशन वो क्या है? So let x be uh, and y be the dimensions, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, आप किसी को भी ले सकते हैं। I have taken length as x and breadth as y. So एरिया कितना गिवन है हमें पेपर का? एरिया इज xy which is 180. This is given to us. Now printed area जो हमें निकालना है, so let's denote it by A, which is, now what's the dimension of the page? The dimension of the page will be x plus 5, okay, and then what will it be? Y plus 4. Okay, let's take this printed area का है ना, so let's take this, sorry I read it wrong, so this is for printed matter, okay, so this will be x and this will be y, correct। लेंथ एंड एक्स एंड वाई डायमेंशंस ही हैं प्रिंटेड एरिया के नाम, दिस इज योर प्रिंटेड एरिया, करेक्ट, दिस इज योर प्रिंटेड एरिया। अब एक्चुअल पेपर का एरिया कितना है हमारे पास? ओके, नाउ दिस इज दैट, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ए इज, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, एक्स वाई प्लस 4x प्लस 5y प्लस 20, एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 180 प्लस 20। नाउ यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें या y का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? Let's find it for y, so we get 180 upon x, correct? This is very important step. So now we will put this in place of y, 180 upon x. So now this has become the equation only in one variable, that is x. So हमें solve करना है x के लिए, correct, and we have to find the critical point, then we have to check for maxima or minima and so on. So now let's move it. So 180 plus 20 is 200 plus 4x plus 00900 upon x. Now let's differentiate it, okay. Now what do we get? 200 का डेरिवेटिव, लेट्स डू इट डी बाई डी एक्स। देखिए आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हमने x प्लस 5 y प्लस 4 लिया है, अगर आप रिवर्स डायरेक्शंस लेंगे तो आपका रिवर्स आएगा, इट्स अप टू यू, कुछ भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे कहीं भी। हमें x यही लेना है, ये नहीं, इसमें देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, sometimes they do write it and that way you have to be very particular, okay. Now let's do it. So derivative of this, derivative of this, what is the derivative of 900 upon x square? 1 upon x ka derivative according to power rule, right? So this is what we get. Now we will equate it to 0 for finding the critical points. So what will you get? 4 is equal to 900 upon x square. So what's your x square? X square is, so 2 2 5. So what's your x? 15. Plus minus 15, but dimension cannot be negative. Correct? So this is what we have. Now let's move on. So this is what we get. So your x is coming out to be plus minus 15. Now let's do it. So what do you get as y? Let's find it out. 180 upon 15. So let's do it. So what do we get? 1 and 12. Now what are the dimensions of the paper? ये तो आपका dimensions हो गया प्रिंटेड एरिया का।
पेपर के डायमेंशंस क्या है, x+5 and y+4. So your paper dimensions are 12 plus 4, that is 16, and 15 plus 5, that is 20 सेंटीमीटर. जो भी उन्होंने दिया है यूनिट वो लिखेंगे. अब ये हमने निकाल लिया, बट पहले हमें क्या चेक करना था, मोस्ट इकोनॉमिकल. मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए आपको क्या निकालना है, आपने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला आपको चेक करना है वो मिनिमा का पॉइंट है या नहीं. मोस्ट इकोनॉमिकल सबसे कम पैसे लगने चाहिए, right? So we have to check it's a point of minima or not. Now let's find it out. So d square a by dx square, we will use second order derivative test. Now this is the second order derivative, right? First order, sorry. So 4 का derivative 0, 900 upon x cube into 2, which will be always greater than 0 for all values of x, positive values, क्योंकि dimension तो positive में ही है और हमारी dimension क्या है, 12. uh, 15, correct? 12 was y, so x was 15. So now here the important point is you will substitute the values if you want. No need to calculate the time, the values and finding it out. So it's greater than 0, so it's a point of, at x is equal to 15 we are getting greater than, so it's a point of minimum. So most economical it is. So this is how do we solve it. Now mark distribution इसका कैसे रहता है, फिर से देखिए. आपने ये जो बनाया स्टार्टिंग में 1, अगेन इफ यू मेक द न्यू वन, अगेन 1, critical point 1, second order derivative test 1, and the final dimensions 1. So this is how it goes on. So otherwise lump sum में we can give 2 marks for all together and all, but otherwise if you make it like this is how it gets distributed, right? So final concluding statement, again you get the mark for everything, final answers and all, and then so on. So this is how it goes on. So this was a question based on application of derivatives, mathematical. First part किस पे था, economic applications पे था. Now let's move on to the next. Now this is the question which is based on matrices and determinant. So it's a word problem given to you. Now let's find it out. The management committee of a welfare club decided to award some of its members, say X for sincerity, Y for helping others, and Z for effective management. तो इसमें ऑलरेडी वेरिएबल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आपको वही लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इक्वेशन बनाना है. यू विल नॉट चेंज द क्वेश्चन वेरिएबल्स. ओके. नाउ द सम ऑफ ऑल द अवॉर्डीज इज 12. So what will be your first equation? X plus y plus z is equal to 12. No need of let statement because it's already given there. 3 times the sum of the awardees for. अब आपको यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर होना है. If you want you can write it in left hand side कौन सा किसका है. So let's write it. X for sincerity. तो हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है. Y for helping others selflessly. Helping लिख देते हैं. Okay. And Z for management. शॉर्ट में आई हैव रिटन, कोई मार्क्स नहीं है उसके. सो पहला इक्वेशन तो हमारा डायरेक्ट था. सेकेंड, 3 times the sum of all awardees for helping others selflessly and effective management added to 2 times the number of awardees for sincerity is 13. So 3 times y it means, okay, plus effective management. Effective management means 3 times for z also. Remember, रीड द क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत एरर होता है. 3 times the sum of all awardees for helping and effective management. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए शायद वो आपके लिए इजी हो जाएगा. करेक्ट. 3 times the sum. Correct. This is what we get. 2 times the awardees for sincerity and the whole is about to be 33. ये आपके लिए ज़्यादा इजी है instead of writing it directly. Clear? Now, if the sum of the number of awardees for sincerity and effective management, sum of the numbers of awardees for sincerity and effective management is twice the number of the awardees, twice the number of the awardees for helping others. ये आपका third equation. Clear? Now let's rearrange these in a simple way so that we can make the matrix easily. राइट. स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसको भी ले आते हैं. नो कांस्टेंट, जीरो. करेक्ट. Now these are the three equations. Now they have asked you to solve this by matrix method to find the number of awardees for each. So हमें x y z निकालना है. अब इसमें steps बहुत important होते हैं. Let's make one matrix A which will be for the
coefficients of xyz. So which will be 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, minus 2, 1. What will be x? That is the matrix for the variables. What will be b? That will be the constant terms. Okay. Now here the important point is, students, if we have expressed this system in the form of ax is equal to b. Now we have to solve for x, so we will do pre-multiplication. Okay. You can write it directly also if you want. So this becomes this. But this is very important to be written. Okay, so this is how we go and start with it. Now we have to solve for a inverse. और a inverse को start करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है inverse exist करता है या नहीं. अगर inverse exist नहीं करेगा, यहीं पे हमारा method fail हो जाएगा. Right? So we will not be able to get a particular solution. Now let's move it. So let's find the determinant value of a. So what was a? Let's write it here once again so that we can do the calculations properly. So what was a? A was 1, 1, 1, 2, 3, 3, and 1 minus 2, 1. Let's calculate the determinant value of a. 1, 3 plus 6 minus 1. So we get here 2 minus 3 and plus 1 minus 4 minus 3. This is what we get. Correct? Now let's do the calculation. Now 9 plus 1 minus 7. So what's the answer? 3, which is not equal to 0. So A inverse exists. Correct? This is what we have. Now we will go for cofactors, adjoint, and now A inverse. So for A inverse, what's the formula? 1 upon determinant value of A, adjoint of A. Now what's your adjoint? Adjoint is transpose of the matrix of cofactors. So let's make the cofactors first. So cofactor का matrix बना लेते हैं पहले, C matrix, okay? So C11, C12. So cofactor के लिए सारे steps दिखाने जरूरी हैं? No. If you are confident, you can make it directly. Otherwise, you have to. Okay? Error नहीं होना चाहिए. Okay, so I'm doing it directly. Now what is cofactor for the first one? Already we have found it. So it will be 3 plus 6, 9. The other one will be plus 1 because alternate positive negative will go for cofactors. Now for the next one, what will it be? Minus 7. ठीक है, अभी बाकी के लिए कर लेते हैं. 2 के लिए leave the row and column in which 2 is there. So 1 plus 2, 3, and it will become minus 3. And I hope you all are clear with this part. Okay. Now we have 1 minus 1, 0. Right. Now what do we have? Minus 2 minus 1. If you are not clear, just let me know. I'll upload one video only on matrix method or only on finding A inverse. Okay, just let me know. Now let's move on to the next one, last line. 1 के लिए leave the row and column. Correct. So what do we get? 0. Again leave the row and column. Plus minus sign का याद रखिए. Don't make the error in plus minus sign. So this is what we have. So what will be the adjoint? Adjoint is transpose of this matrix. Adjoint is transpose of the matrix of cofactors. If I write a simple formula here, Cij जो matrix बना है आपका उसका transpose is adjoint. Okay, so now let's make it. 9, 1 minus 7 minus 3, 0 minus 3, 0 minus 1, 1. So this is your adjoint of A. Correct? Now the point is, this was 3. Plus minus because we did plus minus. Okay, now minus 3 was the minus, so it will become plus. Now let's do it. So 1 upon 3, what's your adjoint? 9, 1 minus 7 minus 3, 0, 3, 0 minus 1, 1. So do let me know if you are not clear with this method because there are high chances that it comes in exam. It's 90% that it definitely comes in exam in one or the other way. A inverse पे एक question तो आना ही आना है paper में. So if you are not clear how to find this inverse, do let me know. Okay, I'll put the video. Now let's make it. So x is A inverse B. 1 upon 3 को
Don't take it inside, keep it here, otherwise it will be tough for you to multiply the fractions and all. Last में हम use करेंगे. Now what's this b? 12 was the sum, 33 and 0. Okay, so that is what we have. Now let's find it out and do it. Now multiply करना है हमको फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम. जिनको मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं है, सी द वीडियो ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, we already have one video on matrix multiplication because again multiplication is something 100% comes in exam. Go through it. Okay, now 9 into 12 108 minus 3 into this and 0, nothing else. Then second row with first column will give you the second row element, so 12 0 0. Then third row, again the first column, so minus 84 plus 99. Now let's solve it. 9, 12, 15. So what's the answer? 3, 4, 5. So X is 3, that is sincerity. Then this is your honesty, it is helplessly, and the Z is effective management. So these were the number of students. Now let's go for the marking scheme. Now for this, again, the important part is the system that you have made and the equations that you have written, everything will come for 1 mark. The equations, the equation part, okay? Now for the determinant, again you will get 1 mark. Then again for this adjoint part and everything, only for adjoint, because cofactors are very important here. Cofactors में maximum cover होता है. So you will get 2 marks for this only adjoint part. अगर आप cofactors निकालेंगे, adjoint निकालेंगे, everything. Then half mark for formula here, right? So again, and the last part. Correct? So it comes to 5 marks then. Correct? So this is how it goes on. So it's a very good question to attempt and it's very easy, formula based है. आप इसका practice जरूर करें. And I hope now you all have understood this section D analysis. We have put the analysis for all the sections of the board paper, sample paper जो board ने भेजा है coming year के लिए. Please do it and analyze which topics are to be done by you and which topics are your weaknesses, which are your strengths, and work on it. If you have liked the solutions and understood well, please do like, share, and subscribe. Thank you, everyone.